Today we will study molecular basis of inheritance chapter. In this chapter we will study that how factor inherit from one generation to another generation. So Gregor Mendel, who known as father of genetics, he discovered that individual traits are inherited as discrete factor which express its effect in hybrid. Now we know this factor as a gene. So DNA acts as genetic material in most of the organism while RNA acts as genetic material in some viruses. So before studying that how it acts as genetic material, we need to understand the structure of DNA and RNA. DNA and RNA are type of nucleic acid. ठीक है, DNA and RNA are a type of nucleic acid which is a polymer of nucleotide. न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिल के बना हुआ रहता है एंड न्यूक्लियोटाइड जो है ये बना रहता है 3 कंपोनेंट से. दैट इज़ योर पेंटोज शुगर जो कि 2 तरह का रहता है, राइबोस एंड डीऑक्सी राइबोस. राइबोस पेंटोज शुगर आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सी राइबोस शुगर आपका डीएनए में पाया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज फॉस्फोरिक एसिड आयन एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजनस बेसिस which is of two type, purine and pyrimidine. Purine includes adenine and guanine and pyrimidine include thymine and cytosine. One more thing is important that adenine form bond with thymine double bond. ठीक है, एडेनिन फॉर्म डबल बॉन्ड विथ थाइमिन while guanine form triple bond with cytosine. And the last, these things are very important to remember for the competitive exam, that pentose sugar plus nitrogenous base. ठीक है, जब पेंटोज शुगर पे नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है. ठीक है, क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है. और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड आयन अटैच्ड होता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है. ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस through diagram. See, here is the structure of nucleoside. As I told you that there are two type of pentose sugar. One is ribose sugar and other is deoxyribose. तो राइबोस शुगर में आपका एडेनिन जो कि एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है ये अटैच्ड हुआ है तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, इसमें जब पेंटोस शुगर डिऑक्सी राइबोस में आपका एडेनिन जो कि एक तरह का न्यूक्लियोसाइड है अटैच्ड हो गया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड. एंड थ्रू विच बॉन्ड नाइट्रोजनस स्पीसीज अटैच्ड विथ this, that is your glycosidic bond. And why we call it n glycosidic bond, because जो एडेनिन का स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पे एन नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है वहाँ से ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फोरिक एसिड आपका अटैच्ड हो जाता है इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड. नाउ दिस इज योर लास्ट स्ट्रक्चर. This is your polynucleotide chain. Fine. This is your polynucleotide chain. This is your nucleotide, this is your nucleotide, this is your nucleotide, and this is your nucleotide. You can see that bond is forming. Which bond is forming between two nucleotide? 3' and 5' phosphodiester linkage. So after this bond formation, this is started forming dinucleotide. After the formation of dinucleotide, then trinucleotide, then tetra, then at last it result into the formation of polynucleotide chain. Now next we will study about direction of nucleotide, 5' to 3' or 3' to 5'. What is this? Why we call it 3' end? Because of the presence of hydroxy group at third position. And why we call it 5' end? 5' end of polynucleotide, because of the presence of because of the presence of phosphorus at 5th carbon. Now we will study about DNA double helix. DNA double helix. So James Watson and Francis Crick proposed a very simple but famous double helix model of DNA. You can see this is double stranded polynucleotide. DNA is made up of two nucleotides. This is the one nucleotide and this is the other one. So the two chain have anti-parallel polarity. You can see that one chain has 5' to 3' polarity and other one has 3' to 5' polarity, and the two chain are coiled in right-handed fashion. Why DNA double helix coiled in right-handed fashion? Because of the bond which is forming between nucleotide. AT form double hydrogen bond and CG form triple hydrogen bond. So because of this bond DNA form double helix structure. Okay, so this is all about DNA double helix structure and structure of DNA. Thank you everyone.